sedative and hypnotics, and the pharmacotherapy of sleep disorders. The chapter is nothing but the drug, sedative, hypnotics drugs. Anxiolytic, sedative, hypnotics. Anxiolytic means what? Anxiolytics are the drug which will decrease your excitement, up to a normal. That is nothing but the anxiety. Suppose that you want to deliver a lecture. Suppose that you want to deliver a lecture in a lecture hall, and you have not done that thing before. So you will have a little bit nervousness. You will have a little bit excitement. That nervousness, that excitement will be relieved by anxiolytic drug. That is meant by drugs which will relieve your anxiety. That is nothing but the anxiolytic. What is meant by sedative drug? What do you mean by sedative drug? So sedative drug is nothing but the drug that will produce that will not produce a sleep. It can reduce the excitement. That can calm your nerve. So if you are having lot of excitement will be reduced by sedative drug. But it will not produce a sleep. And a hypnotic drug is nothing but the hypnotic drug that will induce a sleep, resembling to natural sleep. एंजियोलाइटिक ड्रग ऐसे होगा कि वो आपको सिर्फ आपकी एक्साइटमेंट नर्वसनेस कम करेंगे, आपके स्लीप के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आपके मोटर कोऑर्डिनेशन पे कोई डिस्टर्बेंस, ठीक है। सेडेटिव ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपका एक्साइटमेंट कम करेंगे, आपको कामिंग करेंगे, शांत करेंगे, आपको नींद नहीं लाएंगे। लेकिन हाइप्नोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, हाइप्नोटिक ड्रग्स दैट आर द ड्रग्स दे विल प्रोड्यूस अ स्लीप resembling to natural sleep। ये हाइप्नोटिक ड्रग आपको सुला देंगे डायरेक्टली। Again, there is another term known as anticonvulsant. There is another term known as anticonvulsant. So, anxiolytic, sedative, hypnotic, and anticonvulsant. So, anticonvulsant means what? Anticonvulsant means what? Anticonvulsant means these are the drugs which will reduce your convulsions, which will stop your convulsions. Convulsions is nothing but the rapid firing of neuron, continuous firing of neuron. So that will leads to convulsion and epilepsy, मिर्गी का दौरा, इपिलेप्टिक अटैक आ जाएंगे। उसमें जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं एंटी कन्वर्जेंट और एंटी इपिलेप्टिक। सिंगल ड्रग कैन बी ए एंजियोलाइटिक, इट कैन बी ए सेडेटिव, इट कैन बी ए हिप्नोटिक, इट कैन बी ए एंटी कन्वर्जेंट, इट कैन बी ए एंटीसाइकोटिक आल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द concentration, डिपेंडिंग अपॉन द dose. For example, take an example of diazepam. So in 5 milligram, 5 to 10 milligram, it will act as an anxiolytic. If you increase the dose 10 to 20 milligram, it will act as a sedative. If you increase the dose 20 to 30 milligram, it will act as a hypnotic. If you increase the dose 100 milligram, it will act as an anticonvulsant. If you again increase the dose, it can act as a general anesthetic. So it is a dose dependent action. Sedative means what? Anxiolytic means what? Hypnotic means what? Anticonvulsant means what? We have seen. So now we'll see normally what happens if you sleep. So your sleep is divided into two types. आप जब सोते हो तो जो सोने के बाद में आपको पता नहीं चलता कि आप सोए हो। सोने के बाद में ये दो स्लीप होते हैं। आप सोने के बाद आपको एक ही मालूम है कि आप सो गए। सोने का मतलब that is not only one sleep. Sleep is divided into two types. That is the first one is a non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement, and second one is the rapid eye movement. So as they indicate, at the name indicate non-rapid eye movement. That is NREM sleep. NREM sleep. In the NREM sleep, that is non-rapid eye movement. As the name indicates, there is a not rapid eye movement, eyeball movement. So no rapid eyeball movement is present in the non-rapid movement sleep. So NREM sleep has a 4 stages. Stage 1, stage 0, stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. So NREM sleep is again divided into 4 stages. Stage 0 is known as awake stage. Stage 1 is known as dozing stage. Stage 2 is known as univocal stage. Stage 3 is deep sleep. Stage 4 is sedative. Stage 0 means आप अभी सोए नहीं हो, आप जगे हो, ड्राउजी हो, आप बेड पे लेटे हो, लेकिन आपको आजू बाजू क्या समझ रहा है, आजू बाजू क्या चल रहा है सब समझ रहा है। That is stage 0. Then stage 1 is the dozing. मतलब आप सो रहे हो, कभी कभी आपको आवाज आता है बाहर का। ये जब इनिशियल स्टेज है, जैसे आप स्लीप सोने जा रहे हो, सोने के पहले एक 2-4 मिनट में आपको ये स्टेज मिलते हैं, अवेक, डोजिंग, यूनिवोकल। देन स्टेज 3, अगर आप सो गए मतलब आप गाढ़ा सो गए उसको बोलते हैं डीप स्लीप। देन स्टेज 4 दैट इज नोन एज सेरेब्रल स्लीप। सेरेब्रल स्लीप मतलब उसमें क्या है, नॉर्मली जब आप स्लीप करते हो तो आपको ब्रेन एक्टिव रहता है, लेकिन सेरेब्रल स्लीप में क्या होता है, सेरेब्रम एक्टिवेट नहीं रहता, बाकी के सिस्टम चल रहे थे आपके, बाकी का ब्रेन जो है वो चल रही है, लेकिन सेरेब्रम
कुछ हद तक वो काम कम कर दे. That is cerebral sleep. So NREM sleep is nothing but the peaceful sleep. It is a peaceful sleep. You will not have any dreams in this sleep, in NREM sleep. You will not have any dreams. You will not have any excitement. You will not have any nightmare in this sleep. So that's why NREM sleep is a peaceful sleep. And in this NREM sleep, so parasympathetic activity is predominance. There is a predominance of parasympathetic activity in the non-rapid eye movement sleep. So your sleep is divided into two types: rapid eye movement sleep and non-rapid eye movement. Non-rapid eye movement sleep is nothing but the peaceful sleep where there is a predominance of parasympathetic nervous system. In this sleep, you will get this alpha rhythm together with sleep spindle in the EEG, electroencephalogram. So what is this EEG? EEG is nothing but electroencephalogram. आपके दिमाग, आपका ब्रेन के ऊपर बहुत सारा वायरिंग्स वगैरह लगा के आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं आपके ब्रेन के. आप अगर सो गए हो, सोने के साथ सोने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं ब्रेन का, उसको बोलते हैं EEG, electroencephalogram. So in the NREM sleep there is no rapid eyeball movement. That's why it is a peaceful sleep. Dreams will not occur in this. Nightmares will not occur in this sleep. There is a peaceful sleep and energy conserving sleep. It's parasympathetic predominance. Then again, next type is a rapid eye movement sleep. So it is not a peaceful sleep. 75% dream occurs in this sleep. So whatever dreaming occurs, कि आपको आप सो गए, आपको पता चला और अचानक आपको किसी ने गोली मार दी और आप जागे. ये क्या हो रहा है? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होता है उसमें आपको ड्रीम्स आते हैं. देन दीज ड्रीम्स आर विविड, बिजर, सेक्सुअल इरेक्शन ऑकर्स इन मेल. ये जब मेल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स मेल्स होते हैं, इनमें सब ये आता है, ड्रीम्स होता है, सेक्सुअल इरेक्शंस होता है, बिजर टाइप का ड्रीम, विविड ड्रीम. कभी कोई ड्रीम विविड मतलब क्या? विविड मतलब कोई ड्रीम आपको याद रहता है सुबह, कोई ड्रीम आपको याद नहीं रहता. दैट इज अ विविड ड्रीम. विविड में धुंधला 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 ही आता. कोई ड्रीम अगर आया आपको तो आपको कभी कभी याद हो जाता है, कभी कभी याद नहीं होता. सो ऑल द ड्रीम्स ऑकर्स इन द rapid eye movement sleep. Now what happens in this sleep? There is increase in heart rate, blood pressure, cardiac rate, peripheral resistance. Suppose that आपको एक ड्रीम आया कि आपके पीछे क्या लगा है? शेर लगा है और आप भाग रहे हो, एक ही जगह पे भाग रहे हो. या आप भाग रहे हो एक ही जगह पे, आपको शेर पकड़ने वाला है, आपको लगा है मैं भाग रहा हूँ, तुरंत आप नींद से जाग जाते हो. तो आप देखते हो यार मुझे तो सारा पसीना आ गया, मैं तो सो रहा तो फिर पसीना क्यों आता है? Because you are in a REM sleep, rapid eye movement sleep, and you are getting a dream, and in that your heart rate is increased, blood pressure is increased, cardiac rate is increased, peripheral resistance is increased. So that is nothing but the REM sleep, and this REM sleep will show beta rhythm and rapid eyeball movement. So there are two types of sleeps. First one is the rapid eye movement sleep, and first one is the rapid eye movement and second one is the non-rapid eye movement, right? So rapid eye movement, most of the dreams will occur in the rapid eye movement sleep, and non-rapid eye movement sleep is the most peaceful sleep, and you will have parasympathetic predominance over here. So whatever dreams occurs in the REM sleep. So this one is a peaceful sleep, this one is a non-peaceful sleep. Just remember this. ये normal आपका sleep pattern होता है. इनको अगर डिस्टर्ब होगा sleep pattern, अभी आपको अगर मैक्सिमम मतलब ये 70% ये स्लीप होता है नॉर्मली, ये 70 to 80% स्लीप आपका NREM होता है, 20% REM होता है. लेकिन आपका अगर आपके स्लीप पैटर्न में चेंज होता है, अगर ये ज़्यादा हो रहा है आपका REM स्लीप, उसमें आपका ये ड्रीम्स वगैरह सब आ रहा है, हार्ट रेट वगैरह बढ़ रहा है, तो इसको तो क्लियर करना पड़ेगा. तो इसको क्लियर करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? ड्रग्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स. सो सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स, they are classified. Classification of sedative hypnotics. So selective benzodiazepine receptor agonist. GABA A agonist. What do you mean by selective benzodiazepine receptor GABA A agonist? That means these drugs will combine with the GABA A receptor and will increase the activity of GABA A. These drugs will combine with the GABA A receptor and they will increase the activity of GABA A. So what are those? Those are nothing but the benzodiazepines and non-benzodiazepines. Benzodiazepines, example is your diazepam, oxazepam, lorazepam, temazepam. Lot of drugs are there. Okay, so just remember 2-3 examples. Then non-benzodiazepines like zolpiclone, zolpidem, zaleplon. Zolpiclone
zolpidem, zaleplon. So these are nothing but the Z drugs. Then non-selective benzodiazepine GABA A receptor agonist. These are the selective. They will selectively bind to GABA A receptor and they will increase the chloride ion channel. These are the non-selective. Barbiturates, non-barbiturate, then miscellaneous. Barbiturates, for example, phenobarbital, pentobarbital. Non-barbiturates, for example, chloral hydrate, paraldehyde. Miscellaneous, for example, miscellaneous diphenhydramine promethazine. Miscellaneous means these drugs they are not a sedative hypnotics, but they are having adverse effect of sleep. They are having adverse effect of sedation. So this diphenhydramine is antihistaminic drug. This promethazine is also antihistaminic drug. So these are the antihistaminic or other drug which have adverse effect of sedation. This is the classification of sedative hypnotic drugs. Hello, am I audible you clearly? Now benzodiazepines. Now benzodiazepines. First category is benzodiazepines. We are not going to take each and everything. Whatever is important for your GPAT exam, that is being discussed over here, right? So mechanism of action of benzodiazepines. How they will act. So mechanism benzodiazepines will selectively bind to the alpha subunit of GABA A receptor. So GABA A receptor जो होता है उसका different different subunits होता है alpha, beta, gamma, delta, omega. So 5 it is a pentamer in nature. GABA A receptor is a pentamer in nature. इसका अगर नेचर देखेंगे तो 5 subunits. GABA A receptor has a 5 subunit. It is a pentamer. Benzodiazepines selectively bind to the alpha subunit of GABA A receptor. They are also known as the benzodiazepine receptor or omega receptor. After binding, they will potentiate the action of GABA. They will increase the activity of GABA. They will modulate the effect of GABA. So, what is the action of GABA? Gamma aminobutyric acid is a inhibitory neurotransmitter. You know that. So, it will increase the chloride ion channel in the neuronal cell. If there is a increased chloride ion inside the cell, so outside the cell, normally inside the cell ऑलरेडी निगेटिविटी है और आउटसाइड से आप और क्लोराइड भेज रहे हो अंदर तो उसमें क्या होगा सो दैट विल क्रिएट हाइपर पोलराइजेशन दैट विल रिजल्ट इन द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ सिनेप्टिक मेम्ब्रेन so there will be no generation of impulse there will be no conduction of impulse so there is an inhibitory effect so neuron will be inhibited they will modulate the effect of GABA increasing the frequency of chloride ion channel opening and increases the effectiveness of GABA they will increase the activity of GABA by lowering the concentration required for opening the chloride ion channel and thus they will has an inhibitory effect. This is the mechanism. Okay, GABA A inhibition from brain and spinal cord is responsible for the anti-epileptic. So if a drug is able to inhibit the GABA A in the brain and spinal cord, so which is responsible for the anti-epileptic, that drug is useful as an anti-epileptic. GABA A, that is alpha subunit of GABA A. ओनली स्पेसिफिक एक्शन अल्फा सब यूनिट ऑफ गाबा ए तो ये गाबा ए ये दोनों भी गाबा ए मतलब गामा बेटाबेटिक एसिड ए ये जो रेसिड है इसके 5 सब यूनिट है अल्फा बीटा गामा डेल्टा दोस ड्रग so specifically benzodiazepine GABA they bind with GABA alpha subunit of GABA receptor if drug binds with the alpha subunit of GABA receptor that is known as the omega 1 receptor in the limbic system that is responsible for the sedation hypnotic and anticonvulsive effect. So omega 2 receptor is responsible for the impairment of memory due to chronic use of drug. So here it is just a mechanism of action. Is that clear? Now pharmacological actions. What are the different pharmacological actions of benzodiazepine? So anxiolytic, as they are seen as depressant, they will be because dose dependent seen as depression. So it may be either anxiolytic in smaller dose. So they will act as an anxiolytic in small dose. They will act as a hypnotic in the larger dose. They will decrease the set of टाइमिंग ऑफ द स्लीप कि आपको अगर नींद आने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है आपको नींद ही नहीं आ रही तो अगर बेंजोडाइजेपिन लिया तो आपको जल्दी से नींद आ जाए सो दे प्रोलॉन्ग द स्टेज 2 एंड shorten stage 3 of NREM sleep. The benzodiazepines also act as an anticonvulsant. They will also relieve the convulsions. जो रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स होता है वो भी कम करेंगे बाद में अपन जब एंटी एपिलेप्टिक देखेंगे तो उसमें बोलूंगा again they will also act as a muscle relaxant and anesthetic agent. So okay, so what are the advantages of these benzodiazepines? So all the things are not discussed here. Okay, whatever is important that I have extracted. So they will induce the sleep resembling to natural sleep. मतलब जैसे आपका natural sleep होता है वैसे ही sleep आपको benzodiazepine करेगा. They can induce sleep in presence of pain. That is the main advantage. So if you are having pain and because of that you are not able to sleep, then in that case benzodiazepines
are able to induce the sleep in presence of pain. So no significant action on respiration. That means आपका respiration जो है वो उसके ऊपर कोई action नहीं होगा. नहीं तो क्या होता है, जो डिप्रेशन ड्रग होते हैं वो आपके respiration को भी डिप्रेस करते हैं, CVS को भी डिप्रेस करते हैं, तो इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. Then high therapeutic index. These drugs are having high therapeutic index. I have already explained you what is high therapeutic index, what is near therapeutic index in the very first lecture when we was discussing. So they will have low interaction and low potential of drug abuse. So आपको addiction नहीं होगा, low potential of drug abuse, addiction नहीं कर. Now next one is the adverse drug reaction. What are the adverse drug reactions of these benzodiazepines? You will have dose dependent CNS depression. Then drowsiness means sense of falling in the sleep. It is drowsiness. And lethargy, then ataxia. Ataxia is nothing but the motor incoordination. So if you are all the activities are not able to, if you are not able to do the activities, for example, जैसे आपको नॉर्मली दे सकते कोई चीज उठा के रखना है यहाँ पे, तो आप अगर वो नॉर्मली नहीं रख सकते, इनकोऑर्डिनेशन होता है आपका, शेकिंग होता है हैंड्स का, दैट इज नथिंग बट द ataxia. I have a lot of things tell you on that ataxia. Personally, I am suffering from that ataxia. That is another. So then again, visual motor incoordination. Visual motor incoordination is the adverse effect. Then impairment. Then visual motor impairment means आप जो देखते हो और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो उसमें इम्पेयरमेंट हो जाए. बिहेवियरल चेंजेस, डे टाइम सेडेशन, दिन में भी आपको नींद आ जाएगी. डे टाइम सेडेशन, एंटेरोग्रेड एमनेशिया. Remember, anterograde amnesia. Anterograde amnesia. Amnesia means what? Amnesia means loss of memory. And anterograde means short term. Short term memory loss. Short term memory loss is the adverse effect of benzodiazepine. So if you have seen the movie Gajni, starred by Amir Khan and Asim. So that is Amir Khan is having this anterograde amnesia. So short-term memory loss. So that is nothing but the anterograde amnesia. So it is adverse effect of benzodiazepine. Again, benzodiazepines administered in the pregnant woman will cause a floppy baby syndrome. अगर pregnant woman में आप benzodiazepine use करते हैं तो it can cause floppy baby syndrome to the newborn. अगर उसके पेट में बच्चा है उसको दे दिया benzodiazepine, बच्चे को ये syndrome हो जाएगा. 100% होगा ऐसा नहीं, इन होने के chances होते हैं. Floppy baby syndrome. Just remember there are two major adverse effects. That is anterograde amnesia, depression, drowsiness. ये तो हो गई ataxia. जो भी कौन सा भी ड्रग है आपका सीनेस को डिप्रेस करता है को वो 4-5 एडवर्स इफेक्ट कॉमन होते हैं. सीनेस डिप्रेशन, ड्राउजीनेस, लिथार्जी मतलब थकावट, आपको थक जाएंगे. ataxia इज अ कॉमन. मोटर इम्पेयरमेंट इज अ कॉमन. इनकोऑर्डिनेशन इज अ कॉमन. ये कॉमन है, मतलब कौन सा भी सीनेस डिप्रेशन ड्रग है तो इसको यही एडवर्स इफेक्ट कॉमन आएंगे. मतलब एंजाइटी, एंटी एंजाइटी ड्रग है, या फिर सेडेटिव हिप्नोटिक है, या फिर एंटी कन्वर्जेंट है, या फिर आपका एनेस्थेटिक भी हुआ है. मेजॉरिटी एनेस्थेटिक तो नहीं है, लेकिन जितना भी एंटी कन्वर्जेंट, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है और सेडेटिव हिप्नोटिक्स है उनमें ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट है. लेकिन इससे और कौन सा एडवर्स इफेक्ट है बेंजोडाइज़ेपिन को, तो एंटेरोग्रेड एमनेशिया एंड फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम. नाउ व्हाट आर द थेरापेटिक यूजेस ऑफ दिस benzodiazepines? They are used as anxiolytic, they are used as hypnotic, they are used as anticonvulsant, anesthetic. Then also they are also used in the treatment of withdrawal of alcohol. अगर अल्कोहल की आपको लत लग गई है, उसको अगर सडनली आपको अल्कोहल बंद किया तो आपका जो विड्रॉवल सिम्टम्स आता है, मतलब देखो आप अगर कंटिन्यूसली आप अल्कोहल की लत में हो कि दिन में, मतलब आप पूरे बेवड़े हो कि आपको दिन में 1 क्वार्टर लिया नहीं लिया तो जमता ही नहीं, ऐसा आप इतना एडिक्टेड हो और सडनली आपको अल्कोहल दिया नहीं तो आप क्या होगा, विड्रॉवल सिम्टम्स. विड्रॉवल सिम्टम्स मतलब क्या कि आप अपना सर पटक लोगे, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आप रोने लगोगे, चिल्लाओगे. तो दैट इज नथिंग बट द विड्रॉवल सिम्टम्स. अगर किसी को कोई एडिक्शन है, आपने देखा होगा ड्रग्स एडिक्ट भी वैसे ही होते हैं. कबीर सिंह का देखा है, कबीर सिंह मूवी, अगर उसको ड्रग नहीं दिया तो वो कैसे करता है, that is withdrawal symptoms. So also used in the withdrawal of alcohol, treatment of withdrawal of alcohol. This was important. This is important. Flunitrazepam. Flunitrazepam is a tasteless benzodiazepine. Flunitrazepam is a tasteless benzodiazepine, and it is referred as a date rape. Flunitrazepam is a date rape drug. मतलब क्या है इसमें, ये flunitrazepam एक benzodiazepine है,
क्या करते हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर वो उसका टैबलेट देते हैं लड़कियों को, और एक बार टैबलेट लिया लड़की ने तो वो उसको वो समझ में नहीं आता, वो पूरा उसका स्लीप हो जाती है, हाइप्नोसिस हो जाता है, और उसको लेके जाके फिर वो रेप वगैरह करते हैं, तो उसको कभी कभी बोलते हैं डेथ रेप ड्रग फ्लूनाइट्राजोल। तो आपको यूज नहीं करना है ये, लेकिन सिर्फ आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए which drug is known as a date rape drug, that is a flunitrazole. So there are a lot of drugs, benzodiazepine drug, diazepam, chlordiazepam peroxide, oxazepam, temazepam, nitrazepam, and lot of drugs are there. So we will see all that in the upcoming lecture when we will see sedative hypnotics as per the medicinal chemistry point of view. I will explain this, the structure and all that, the structure activity relationship and all that in that chapter. Okay. So here what is important? Just try to remember the adverse effect, mechanism of action, then flunitrazepam is a date drug. Then if the toxicity of this benzodiazepine occurs, अगर by mistake आपने benzodiazepine का डोज लिया, ओवरडोज, और आपको टॉक्सिसिटी हो गया, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए एंटीडोट क्या है, उसको कैसे काउंटरैक्ट करना है, हाउ टू काउंटरैक्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ benzodiazepines. So you can counteract the toxicity of benzodiazepine. So there is one drug known as a flumazenil. 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 It is a imidazole benzodiazepine receptor. It is a imidazole benzodiazepine derivative. It is a competitive antagonist of benzodiazepine receptor. Okay, so benzodiazepine receptor are the agonist to the GABA A receptor, right? And this flumazenil is antagonist. So whatever benzodiazepine toxicity is there, it can be reversed by this flumazenil, right? So flumazenil is a benzodiazepine receptor antagonist. So toxicity of benzodiazepine, or it is also known as an antidote for benzodiazepines. So what is antidote for benzodiazepine? Flumazenil, right? So it is a imidazole benzodiazepine derivative, and it is a competitive antagonist of benzodiazepine receptor. Okay. So whatever the toxicity symptoms you will get, जैसे सेडेशन हो गया आपका, सेडेशन आ गया आपका, ये हो गया, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, या फिर जो भी बिहेवियरल चेंजेस, जो भी ओवरडोज की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, वो काउंटर कौन करेगा? फ्लोमाजेनिल. ओके, नाउ दिस फ्लोमाजेनिल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद raised intracranial pressure and head injury. So flumazenil is contraindicated in the head injury. Right? Now there is another one. There is another one known as a biculin. Bicuculin. There is another drug known as a bicuculin, which is a non-competitive inhibitor of benzodiazepine. So there are two inhibitors of benzodiazepine, but this flumazenil is used as antidote. Flumazenil is used as an antidote for your benzodiazepine poisoning or benzodiazepine toxicity, right? Now bicuculin is another one that is a non-competitive inhibitor of benzodiazepine receptor. Okay, so that was all about the benzodiazepines. Now non-benzodiazepine receptor agonists, those drugs which are not benzodiazepine but they are benzodiazepine receptor agonists. So what are they? They are nothing but the zopiclone, zolpidem, zaleplone. Okay, so zopiclone is nothing but the cyclopyrrolone ring. It has cyclopyrrolone ring. Zopiclone will have cyclopyrrolone ring in the structure. Then zolpidem is having imidazopyridine ring. Imidazopyridine ring. Zolpidem. And zaleplone has a pyrazolopyrimidine ring. Okay. They are known as Z agents because their name start from Z. Zopiclone, zolpidem, zaleplone. Okay, so that's why they are known as Z agents, and they are a benzodiazepine receptor agonist, selective benzodiazepine receptor agonist. Okay, and they have greater selectivity for the omega 1 receptor, which is known as a benzodiazepine receptor. Okay, they have same pharmacological actions like benzodiazepine, but they will have a less adverse effect than benzodiazepines. That's why they are now in a trend. Okay, so इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आया है, which drug is a benzodiazepine receptor agonist but they are not a benzodiazepine. So it is nothing but the zopiclone, zolpidem, zaleplone, right? Now barbiturates. Now second one is a barbiturates. Barbiturates is nothing but they are the derivative of barbituric acid. So
Barbituric acid itself is a condensation product. Barbituric acid is itself a condensation product of malonic acid and urea. ओके, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा हिस्टोरिक कहानी भी है. देखो, फर्स्ट टाइम जब बार्बिट्यूरेट का इन्वेंशन हुआ था तो कैसे हुआ था, मतलब ये कहानी सच है या झूठ है, आई डोंट नो. जैसे मेरे टीचर ने हमको बोली थी, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है. तो क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं उसमें कुत्ते पालने का बहुत शौकीन होते हैं लोग. तो वेस्टर्न कंट्रीज में डॉग्स लवर ज़्यादा होते हैं, मतलब आजकल के डॉग लवर, मतलब उनको सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के डॉग ही अच्छे लगते हैं, स्ट्रीट डॉग नहीं. ठीक है, तो वो कहीं के डॉग लवर होते हैं तो घर में डॉग रखते हो. ठीक है, तो वैसे एक वेस्टर्न कंट्री के घर में डॉग था, एक छोटा बच्चा था, और वहाँ पे एक एप्पल पड़ा था कि एप्पल बच्चों को खाने के लिए होता है. तो वहाँ पे एप्पल पड़ा था, एक एप्पल पड़ा है आधा खाया वाला एप्पल. ठीक है, और एप्पल पड़ा है, बच्चा है वहाँ पे डॉग से, और वो डॉग को आता है सुसु. वो सुसु करता है वो एप्पल पे. ठीक है, वो एप्पल पे सुसु करता है और बाद में वो बच्चे ने वो एप्पल खाया, तो बच्चा सो गया. अभी वो गए डॉक्टर के पास कि हुआ क्या है एग्जैक्टली. कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला क्या हुआ था, हिस्ट्री वगैरह बोला कि कहाँ कैसे हुआ क्या हुआ. उन्होंने बोला यहाँ पे वो डॉग के साथ मेरा बच्चा खेल रहा था, उसको एप्पल खाने के लिए दिया था, और बस खेला, बाद में वो सो गया, तो अभी उठ ही नहीं रहा. तो फिर वो डॉक्टर ने उसको इन्वेस्टिगेट करके रिसर्च करके देखा एग्जैक्टली हुआ क्या है. सो सो जो डॉग का यूरिन होता है उसमें, डॉग का में सबका यूरिन जो होता है उसमें यूरिया होता है. ठीक है, उसमें होता है यूरिया. तो और जो एप्पल है, एप्पल में होता है मेलोनिक एसिड. So urea will react with the malonic acid to form a barbituric acid, and that's why that kid was sleeping. कि उसका जो कुत्ते ने जो सुसु किया था उसके ऊपर, एप्पल के ऊपर, उसके साथ में क्या बन गया, बार्बिट्यूरिक एसिड बन गया रिएक्शन होके, और वो उसने बाद में खाया तो वो, और बार्बिट्यूरिक एसिड इज नथिंग बट द सेडेटिव हिप्नोटिक, और वो सो गया फिर बच्चा. ठीक है, तो ऐसा एक कहानी था उसके ऊपर. टाइम नहीं आपने बस सब कुछ बोलेंगे. So barbiturate acid is a condensation product of malonic acid and urea. Remember, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा था. Okay, then it is devoid of any pharmacological activity. Now classification of barbiturates. So barbiturates are the drugs which are the derivative of this barbituric acid. Okay, so they are classified into these types. First one is a long acting barbiturates. Long acting, that means they will have a duration of action 8 hours or more. Okay, so long acting, which one is a phenobarbital? Example is phenobarbital. Phenobarbital is a long acting. Then intermediate acting 4 to 8 hours. Duration of action is 4 to 8 hours. So example is amylobarbital, butobarbital, pentobarbital. Then short acting, duration is less than 4 hours. Secobarbital. Remember, secobarbital is a short acting. Then ultra short acting, or they are also known as IV anesthetics. Example, thiopental, sodium, methotrexate. Okay. Now, what is the mechanism of action of barbiturates? Now, mechanism of action of barbiturates. So, they will bind to a beta subunit of GABA A receptor. They will bind to a beta subunit. Okay. So, benzodiazepines was binding to the alpha subunit of GABA A receptor. So, here barbiturates will bind to beta subunit of GABA A receptor. They will increase the duration of opening of chloride-gated GABA-gated chloride ion channel and hyperpolarize the cell membrane and post-synaptic cell. Okay, and they will act as an inhibitor. In large doses, they directly open the chloride ion channel. That's why they are non-selective. Okay, they are non-selective. Chloride channels. Also, they also inhibit the excitatory glutamate receptor, AMPA glutamate receptor. That means they have little bit more 2-3 side of action. They will act as a GABA agonist by binding to the beta subunit of GABA. They will increase the opening of chloride ion channel. Again, in the large dosage, they will directly open the chloride ion channel. They also inhibit the excitatory neurotransmitters. Okay, this is the mechanism of action of barbiturates. Now, what is the pharmacological action? Again, dose dependent CNS depression. अगर कम डोज दिया तो कम डिप्रेशन ज़्यादा. So they will act as anxiolytic, sedative, and hypnotic. Again, anxiolytic, sedative, hypnotic. Okay. They will induce a sleep resembling to natural sleep. They cannot induce sleep during pain. This is the disadvantage. But benzodiazepines was able to induce the sleep during pain also. Okay.
So as compared to benzodiazepines, they will have more hangover. Okay, then hypnotic dose of barbiturates can cause motor incoordination. मैंने बोला था आपको motor incoordination, visual impairment, drowsiness, sedation, ये सब adverse effect है sedative hypnotics. कौन सा भी है सबका है, ठीक है. Then again barbiturates are anesthetic. So example thiobarbiturates, they are anesthetic. Thiobarbiturates, why they are anesthetic, ये सब मेडिसिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बोलूँगा कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ sulfur in the barbiturate ring will increase the lipid solubility of the drug. That's why will decrease the duration of action and will increase the onset of action. This is a then they are also anticonvulsant like phenobarbital and nevobarbital. Barbiturates can cause dose-dependent depression of respiratory system, myocardium, and vasomotor center. Then these all barbiturates are hepatic microsomal enzyme inducer. They will induce the enzyme. They will okay. So अगर बारबिट्रेट लिया है आपने, बारबिट्रेट का कोई ड्रग लिया है और दूसरा उसके साथ में ड्रग लिया है, तो दूसरा का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, because they will induce the microbial enzyme inducer. They are microbial enzyme inducer. Okay, so induces delta amylo livolinic acid ALA synthesis. ये एंजाइम होता है डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड, दैट इज ALA synthesis. So इसको इंड्यूस करते हैं. ओके, then phenobarbital increases hepatic glucouronyl transferase and bilirubin binding Y protein and stimulate the metabolism of bilirubin. phenobarbital जो है वो आपके लिवर में ग्लूकोयूरोनिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम उसको पड़ता है. बिलिरुबिन का बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज वाई प्रोटीन, उसको भी बढ़ता है एंड स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन. अगर ये बिलिरुबिन में का लेवल का स्टिमुलेट कर रहा है, बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करता है, तो इसका और एक यूज होता है. ठीक है, तो इसका तो यूज फेनोबार्बिटोन का यूज तो है कौन सा, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंजाइयोलाइटिक, एंटी कन्वल्सेंट, इसके बाद एनेस्थेटिक. लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये ग्लूकोयूरोनिल ट्रांसफरेज एंड जो बिलिरुबिन होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट कर देता है. तो इसका यूज किस में हो सकता है, आप ही बोलो किस में हो सकता है इसका यूज. If phenobarbital is able to increase the bilirubin Y protein and increases the metabolism of bilirubin, then what will be the potential use of this phenobarbital? Except मतलब जो भी है अभी जो sedative hypnotics, anticonvulsant, आपका anesthetic, इसके बावजूद कौन सा यूज हो सकता है? Yeah, it is used in the neonatal jaundice. Correct. It is used in the neonatal jaundice. ऐसा थोड़ा सा करो आप. So it also used in the neonatal jaundice. So next one is the absorption, distribution, metabolism, and elimination. So they are maximum absorption occurs in the stomach because they are weak acids. They are easily get absorbed from the stomach as they will remain in the unionized form in the stomach. Barbiturate acid are absorbed uniformly throughout the GIT. Then what are the adverse effects of these barbiturates? So first adverse effect is intolerance. So your body will not accept and they will reject the body. They will be intolerance. No, okay, normal reaction like excitement, nausea, vomiting, diarrhea, headache. Barbiturates may produce the neuralgia. Neuralgia means nerve pain. Neuralgia means nerve pain. They may produce nerve pain. Then myalgia means muscle pain, arthritis. Okay, these are the intolerant reactions. Then megaloblastic anemia on the long term treatment. अगर आपको long term treatment है barbiturates का, long term में लेते हैं आप treatment, so you may suffer from megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia means what? Megalo means, mega means large, plastic means cell size. Okay, so it will increase the cell size of your RBC and decrease the conduction of your oxygen. Okay, oxygen carrying capacity will be decreased and the cell size will be increased. That is nothing but the megaloblastic anemia. Then again depression, then depression of fetal respiration, depression of fetal respiration. प्रेग्नेंट वुमन में लिया है, उसके पेट में जो बच्चा है उसका रेस्पिरेशन डिक्रीज करेगा, डिप्रेस करेगा. Then propyria, then drug automatism. Another major problem of barbiturate is drug automatism. So drug automatism means क्या? Because of confusion and amnesia, patient may take repeated doses at the night and poison himself. The phenomenon is known as drug automatism. इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को बार्बिट्रेट चालू है, बार्बिट्रेट मतलब सभी बार्बिट्रेट के बारे में आ गया उसका, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेनोबार्बिटोन या फिर मेफोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, ये सब ओवरऑल बोल रहा हूँ. तो बार्बिट्रेट का अगर पेशेंट चालू है उसके ट्रीटमेंट बार्बिट्रेट, क्या होता है, बार्बिट्रेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि इट विल कॉज अमनेशिया. अमनेशिया मीन्स
मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन एमनेशिया। मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन में क्या होता है कि पेशेंट भूल जाता है कि मैंने टैबलेट लिया है या नहीं लिया है। उसने लिया भी है तो फिर भी वो भूल जाता है कि मान लीजिए कि डॉक्टर ने बोला है आपको सुबह शाम एक एक टैबलेट लेने के लिए। क्या होता है इनिशियल तो कुछ नहीं, लेकिन बाद में ट्रीटमेंट कुछ दिन के बाद बारबिटरेट से एक प्रॉब्लम आता है कि वो कंफ्यूज होता है पेशेंट, यार भूल जाता है वो मैंने लिया था, और फिर से वो लेता है, बार बार लेता है डोज। सो इट विल टेक रिपीटेडली द डोज एंड पॉइजन हिमसेल्फ, and that the phenomenon is known as drug automatism. So drug automatism is a problem with barbiturates. Okay, floppy baby syndrome is a problem with benzodiazepine. Short-term memory loss, that is enterocortical amnesia, is the problem with your benzodiazepine. Again, tolerance and dependence. So repeated administration of these barbiturates may result in the tolerance and dependence. Tolerance means what? Tolerance means what? अगर आपको 5 मिलीग्राम फिनोबार्बिटोन दिया और आपको स्लीप आ रही, नेक्स्ट टाइम आपको दिया 5 मिलीग्राम बार्बिटोन, लेकिन आपको स्लीप नहीं आ रही, आपको 10 मिलीग्राम की जरूरत पड़ी, 10 मिलीग्राम लिया तो आई, नेक्स्ट टाइम आपको 10 मिलीग्राम से भी नहीं आ रही, 15 मिलीग्राम लग रहा है स्लीप लाने के, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। दैट इज अ टॉलरेंस, यू बिकम टॉलरेंस। एंड देन ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्शन, you have chances of getting addicted to the barbiturates. Then drug interaction. So these barbiturates will have interaction with other CNS depressant drugs, then MAO inhibitors, then benzodiazepine, alcohol, etc. These are the adverse effects. Now, what are the therapeutic uses of these barbiturates? They are used as a sedative, hypnotic, anticonvulsant, and general anesthetic. They are used in the psychotic diseases, like if you are suffering from psychosis, mania, like that. Because of phenobarbital can induce bilirubin Y protein and can increase the metabolism of bilirubin. That's why it is also used in the neonatal jaundice. Remember, neonatal jaundice, because of enzyme induction and stimulation of glucuronidase transferase. It is used in the neonatal jaundice. What is toxicity of your barbiturates? So ingestion of large dose of barbiturates accidentally or by suicidal intention. So there are different intentions. अगर मान लीजिए कि आपको सुसाइड करना है तो आपने ले लिया तो सुसाइडल इंटेंशन होगा। किसी को आपको मारना है तो उसने आपको बल जबरन आपको ड्रग दे दिया, उसको बोलते हैं सुसाइडल इंटेंशन। सुसाइडल इंटेंशन, होमिसाइडल इंटेंशन, एंड देन एक्सीडेंटल। अगर आपने एक्सीडेंटली ले लिया कोई ड्रग, आपको मालूम ही नहीं इसमें ड्रग है, ये इसमें पॉइजन है, आपने ले लिया तो दैट इज एक्सीडेंटल पॉइजन। और आपको मालूम है ये पॉइजन है, लेकिन आपको हर एक ड्रग पॉइजन ही होता है, ठीक है। वैसे आपको जो ड्रग दिया है प्रेस्क्राइब डोज उससे ज्यादा आपने लिया तो वो दैट इज नोन एज, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्सीडेंटल। बट आपको मालूम होते हुए भी फिर भी आपने ले लिया, दैट इज सुसाइडल। और आपको मालूम नहीं है लेकिन दूसरे को मालूम है कि ये पॉइजन है और इसको मारना है, उसको दिया है उसने, दैट इज अ होमिसाइडल। तो अगेन यहाँ पे पॉइजनिंग का 3 टाइप होता है, मैं बाद में ऑलरेडी एक वीडियो है, बाय एक्सीडेंट और बाय सुसाइडल इंटेंशन और बाय होमिसाइडल इंटेंशन। If there is a toxicity of barbiturates, then what you have to do? So first thing you have to do is gastric lavage. Gastric lavage means पेट को साफ करना है, आपके पेट में इरिगेशन करना है, that is gastric lavage. Then endotracheal intubation, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया है तो एंडोट्रैकियल इंटुबेशन करना पड़ेगा, आपको वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे छेद करके वेंटिलेशन लगाना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे छेद है मेरे, क्योंकि मैं भी वेंटिलेशन लगा के आया हूँ। उसके बाद फोर्स डायूरेसिस यूजिंग मैनिटोल। Then furosemide is a loop diuretic, and it can be considered as a specific antidote for barbiturate poisoning. वैसे तो कोई specific antidote नहीं है इसके लिए, but furosemide, you can consider furosemide as a specific antidote. This was again a question, very important. Then alkalization of urine. Alkalization of urine will increase the excretion of barbiturates. Okay. Alkalization of urine will increase the excretion, and so that you can easily remove the barbiturate from body. Then again intravenous fluid and nursing care and all that rest of the things are proper, like antibiotics कि secondary infection ना हो इसलिए आपको antibiotics. So this is nothing but the toxicity of benzodiazepines. Now next one is the other drugs. Okay, so other drugs like chloral hydrate is there, then phenaldehyde is there. Okay, then alcohols are there. So alcohols will be discussed separately. Don't worry, I will explain alcohol in the half an hour in the next lecture, maybe in the next lecture. So now chloral hydrate.
So chlorohydrate, or it is also known as trichloroethanol. It is metabolized to trichloroethanol in the body. So it is a prodrug. Okay, its active metabolite is a trichloroethanol, and this trichloroethanol will exert hypnotic action, sedative hypnotic action. So okay, just remember these things. It is allergic to the skin. So allergic skin rash is the adverse effect. Then it has an unpleasant taste, and rarely it is used in the therapeutics nowadays. Nowadays it is not used. Another drugs with prominent sedation as a side effect. कि दूसरे ड्रग्स कौन से हैं जिनका सेडेशन एज साइड इफेक्ट है, जैसे आपका एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गए लाइक क्लोरप्रोमेजिन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लाइक अमेट्रिप्टिलिन, एंटी हिस्टामिनिक मोस्टली, डाइपेनाइट्रामाइन, प्रोमेथाजिन, सिट्रिजिन, जो है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जो एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं जो आपको एलर्जी में यूज करते हैं, ठीक है, सर्दी में, डाइपेनाइट्रामाइन, फिनेलेफ्रिन, फिनाइलप्रोपेनामाइन मैलेट, सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन को उतना नहीं सेडेशन, लेकिन डाइपेनाइट्रामाइन को है ज़्यादा, ठीक है, डाइपेनाइट्रामाइन प्रोमेथाजिन आपका फिनेलेफ्रिन होगा. These drugs are antihistaminic, but they have a sedation as an adverse effect. They will depress the CNS. So their adverse effect can be useful as a main action in the another circumstances. They are not used as a sedative hypnotics, but their adverse effect is there. So these are the adverse effect. Anticholinergic drug like scopolamine is also a CNS depressant. Then next drug is the paraldehyde. Is paraldehyde. So it is given by rectal route, intramuscular route to induce the hypnosis. It can cross the placental barrier and therefore may delay the establishment of breathing in newborn. So it should not be used in the pregnant woman. So ये अगर pregnant woman में दिए तो वो क्रॉस करता है placental barrier, और जो बच्चा है उनके पेट में, तो वो पेट में उनका बच्चा जो है उसको ब्रीथिंग रोक देता है और या फिर डिले करता है ब्रीथिंग, तो उसको हार्म हो सकता है. So it is irritant to rectal and gastric mucosa, and it is used. It can cause tissue necrosis. It can damage your tissue. Nerve. It can also damage nerve damage. So nerve damage, tissue necrosis is the adverse effect. It decomposes to paraldehyde and acetic acid in presence of light and temperature. Therefore, it should be used within 6 months. ये important है, ये question आया था एक बार. So paraldehyde will decompose into acetaldehyde and acetic acid and in presence of light. Therefore, it should be used within the 6 months. Okay, paraldehyde. Other important points like sleepwalking, night terror, they are the mild and severe manifestations of insomnia. Insomnia means what? Insomnia means lack of sleep. If you are not able to fall in a sleep, that is known as insomnia. अगर आपको sleep आता नहीं है, आपको सो नहीं पाते हो, that is known as insomnia. Sleepwalking, अगर आपको नींद में चलने की आदत है, night terror, sleepwalking मतलब नींद में चलने की आदत. नाइट टेरर में भयानक सपना आता है. दे आर द माइल्ड एंड सिवियर मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंसोम्निया. अगर आप इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, आपको ये सब हो सकता है. देखा होगा किसको नींद में चलने की आदत. नाइट मेयर्स आर कॉमनली नोन एज बैड ड्रीम्स. ओके, नाइट मेयर्स क्या होता है? बैड ड्रीम्स होता है कि आपको पता चला कि नींद में हो आप, और आपको अचानक आपके दुश्मन ने आकर हमला कर दिया, या फिर मान लीजिए कि आपको एक ड्रीम आता है कि आप किसी राज्य के राजा हो और दुश्मन सैनिकों ने अचानक आपको नींद में मार डाला. दैट इज अ नाइटमेयर्स, बैड ड्रीम. ड्रग्स कॉजिंग इंसोम्निया. सो देयर आर सर्टेन ड्रग्स व्हिच यूज ऑफ दीज ड्रग्स कैन लीड्स टू इंसोम्निया. कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसोम्निया ड्रग के कारण भी हो सकता है. लाइक सीएनएस स्टिमुलेंट, अगर आपको सीएनएस स्टिमुलेंट का ट्रीटमेंट चल रही है बहुत दिन तक, तो यू मे सफर फ्रॉम इंसोम्निया. सीएनएस स्टिमुलेंट लाइक एफेड्रिन, एम्फेटामाइन, कैफेटिन, nicotine, etc. These are the CNS stimulants. When we will see the chapter CNS stimulant, we will discuss about these drugs in detail. Then anorexia. Anorexia means what? Anorexia means lack of appetite, lack of hunger. अगर आपका भूख चली गई है तो उसको बोलेंगे anorexia. अगर कोई ड्रग आपको भूख मार देता है आपकी, तो उसको बोलते हैं anorexia. So if drug is able to suppress your appetite, then that is known as anorexia. Then nasal decongestant, buspirone, levodopa, amantadine, chloroquine, metronidazole, diuretics, systemic glucocorticoids, MAO inhibitors, and selective serotonin reuptake inhibitors. These drugs can cause insomnia. Okay, that is a lack of sleep. So it was all about the sedative hypnotics.